Good morning. Namaste. Sat Sri Akal. This is Veena Lamba. How are you, everyone? सबको हैप्पी शुक्राना. मैं थोड़ा एक्चुअली लगाती हूँ, थोड़ा शब्द लगाती हूँ. घड़ी ना देखण देई अपना बिरद सबाते प्रभु से लाभ रहे हो मेरा जीत प्रभु से लाभ रहे हो मेरा जीत आद अंत प्रभु सदा सहाय आद अंत प्रभु सदा सहाय धन हमारा मीत धन हमारा मीत धन हमारा मीत धन हमारा मीत औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद सबाते औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद सबाते अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले मन बिलास भये साहिब के मन बिलास भये साहिब के अचरज देख बढ़ाई अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई प्रभ पूरन पैज रखाई प्रभ पूरन पैज रखाई प्रभ पूरन पैज रखाई औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे रखे अपने को हाथ दे रखे अपने को सांस सांस
व्रत पाले, सास सास व्रत पाले, औखी घड़ी न देख गई, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देख गई, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं अकेली आ रही थी, लेकिन मैंने कल नरेंद्र जी को बोला प्लीज़ ज्वाइन मी, तो वो वेट कर रही हूँ उनकी, थोड़ी उनकी प्रॉब्लम इश्यू हो रही है उनके कंप्यूटर के साथ, सो ही माइट बी ज्वाइनिंग मी एनी टाइम, बट सिंस आई एम अलोन राइट नाउ एंड आई हैव थॉट अबाउट दिस कपल ऑफ सब्जेक्ट्स, मैंने कहा थोड़ी बात करूँगी आज। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ एक सब्जेक्ट है हमारा आज एक्चुअली लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड, पर उससे पहले मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि आज इज़ अ वेरी स्पेशल डे टुडे, क्योंकि आज इज़ एक्चुअली द डे व्हेन गुरु हरगोबिंद सिंह जी, जो हमारे 6th गुरु थे इन लाइन, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु अर्जन देव जी, ही बिकेम द 6th गुरु इन द सिख लीनियज। हमारे 10 गुरुज हैं, तो नंबर 6 थे। तो he taught that a Sikh should be a संत सिपाही, उनको संत सोल्जर होना चाहिए। He was deeply spiritual while also fearless in defending truth and righteousness. This teaching became a defining principle of Sikhism. तो ये उन्होंने उस दिन, ये आज के दिन किया था, उसका नाम, उसको कहते हैं मीरी पीरी, सॉरी। उसका मतलब होता है that this day commemorates the principle introduced by Guru Hargobind Singh Ji of Miri and Piri, the two swords symbolizing Piri, spiritual authority, devotion to God, humility and prayer, and Miri, temporal authority, courage, justice and standing up for the oppressed. तो ये आज उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, जुलाई 24, 2026 आज है। तो लेकिन उस टाइम पे जुलाई 24 को किया था, या जुलाई में किया था उन्होंने दिस प्रिंसिपल। सो इट इज़ रियली वेरी actually also emotional day, because the first week in August हमारे जो सबसे छोटे गुरु थे, Guru Harkrishan, they, हमारे जो थे, today actually on Miri Piri Divas, we remember the timeless teaching of Guru Hargobind Sahib Ji, that true strength lies in balancing spirituality with courage, compassion with justice, and prayer with action. May we all strive to become saintly in our hearts and fearless in doing what is right. Like I said, there's also one other very important day, which is actually in August 7th ko hota hai, and that is the Prakash Purab, birth anniversary of Guru Harkrishan Sahib Ji. He is remembered for his compassion and selfless service to the sick during an epidemic in Delhi. तब दिल्ली में कॉलरा और चिकन पॉक्स बहुत हुआ था, एंड गुरु हरकृष्ण जी जो थे सिर्फ 5 साल के थे जब वो गुरु बने हैं, only 5 years old, remember that, very so young, and he passed away at the age of 8. And what he used to do was, he was born on July 7th, देखो जुलाई है, इस महीने की जुलाई भी है, हम जुलाई में जा रहे हैं, 1656 in Kartarpur Sahib, and he became the 8th Sikh Guru in 6061. He is lovingly known as Bal Guru, the child Guru, because छोटे से थे, 5 साल के थे, and because of his young age, during a devastating outbreak of smallpox and cholera के टाइम पे दिल्ली में बहुत फैल गया था, तो उन्होंने बहुत सबकी सेवा करी, सबकी। तो इतने छोटे से थे, बट इतनी एज कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट व्हाट यू हैव, अपने अंदर क्या फीलिंग होती है लोगों के लिए, कंपैशन क्या होता है, यही सब चीज़ें हम सीखते हैं नरेंद्र जी से, कंपैशन एंड कंपैशन। तो यही मैं कह रही हूँ, गुरु जो थे छोटे से थे, गुरु हरकृष्ण जी, such a small 5-year-old, but he served tirelessly, smallpox, chickenpox, cholera, all of these things was happening, and he served the sick people, not the sick, the sick, but a different side.
by providing comfort, water, and blessings without regard for caste or religion. So ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कई लोग होते थे पहले कि अपने में ही करते थे, अपने कास्ट में, दूसरे में कुछ हेल्प ही नहीं करते थे। अभी भी ऐसे चलता है, अभी भी इन दिनों में भी होता है ऐसे। लेकिन one have to look at the broader picture कि what are they saying, different religion में मेन फोकस क्या है, what are they teaching। सबका आपको अगर सब रिसर्च करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, सबका सेम है, कोई फर्क नहीं है, सबका सेम है। लेकिन कल का सबका थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन बेसिकली एंड्स अप टू बी द सेम। एंड while serving others, Guru Harkrishan ji, he contracted smallpox himself and passed away in 1664 at the age of 8. And before passing, leaving his earthly form, his final words, Baba Bakale, guided Sikhs to the next Guru, Tegh Bahadur ji. There's a beautiful lesson from, देखो जी वही मैं जो भी कह रही थी, गुरु हरकृष्ण जी जो 5 साल के थे तब गुरु बने थे, and he passed away at the age of 8. Age does not determine greatness, compassion, humility, and selfless service. That anybody can do that. So this is a wonderful message that I want to bring up today. मैंने सोचा कि आज स्पेशल हमारे 10 गुरु हैं, कुछ ना कुछ उनका होता रहता है, अभी always something special going on. So today was one of those days that I wanted to pass the message on. Okay, very important 2 things, especially Guru Gobind Singh ji ने, वो भी उनका भी थोड़ा है, he was the 6th Guru, born on June 19th, 1595 at Guru ki Wadali near Amritsar. Father was Guru Arjan Dev Ji, and after he was martyred, then Guru Hargobind became the next Guru. And he wore 2 swords, Miri, temporal, worldly authority, and Piri, spiritual authority. And he built the Akal Takht, the highest seat of temporal authority of Sikhs, opposite the Harminder Sahib Golden Temple, known as the first Sant Sipahi. Guru also, who taught Sikhs to combine devotion to God with the courage to stand against injustice. Bandi Chor Divas, he is also remembered for securing the release of 52 imprisoned kings from Gwalior Fort. This event is celebrated as Bandi Chor Divas, which often coincides with Diwali. And this was done by, देखो जी कितना उन्होंने किया कि कितने सारे जो थे वो गुरुज थे, या वो कहते हैं उनको, बंदी चोर में उनको ग्वालियर में थे किंग्स, माय गॉड, इवन किंग्स, 52 किंग्स जो उन्होंने छुड़ाया वहाँ से, फ्रॉम ग्वालियर फोर्ट से. Can't believe it, 52. And he was the one. And his teachings is very, very, very spiritual. To be spiritually humble, but never be afraid to stand up for truth and justice. I agree. That is, one should stand up for that. Never make up a story or just to make yourself look good. One should stand, because the truth eventually will come out anyway. And Guru Hargobind Sahib Ji transformed the Sikh community by showing that a Sikh should be both deeply spiritual and courageous in protecting the weak and defending righteousness. तो ये थोड़ा मैंने गुरुज के बारे में बात करी है. मैं कभी मैं दिल करता है मैं इनके बारे में बात करूं. सारे जो गुरुज हैं, एक यूनिक स्टोरीज है, यूनिक रियलिटी है, and it's all true, all true. But my first subject was actually about loneliness, which I was going to, Narendra ji and I was going to talk about. तो मैंने थोड़ी अपना आप रिसर्च करी इसके बारे में. लोनलीनेस, कहते हैं लोनलीनेस एंड बीइंग सॉलिट्यूड में लुक द सेम फ्रॉम द आउटसाइड, पर दो बिल्कुल डिफरेंट है एक्सपीरियंसेस. तो लोनलीनेस होता है is the feeling of being emotionally disconnected or isolated. You can even feel lonely in a room full of people. बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने लिखी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो तो 50 हो, 100 बंदे हों, या 20 हो, या 25 हो, जैसे भी है, तो उनके सबके ग्रुप अपने क्लिक्स बने होते हैं, ग्रुप 4-5 का इधर इकट्ठे, उसमें ही बात करते हैं. कोई नया बंदा आता है तो उसको वेलकम भी नहीं करते और देखते भी नहीं है. एंड जो अकेला आता है वो थोड़ा फील करता है कि भाई मैं किस माहौल में आ गया हूँ, तो मैं तो किसको जानता भी नहीं हूँ, मुझे कोई देख भी नहीं रहा, मुझे कोई हेलो भी नहीं करता. सो उस टाइम पे इंसान बड़ा लोनली फील करता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, although the place is full of people. It has happened to me many times.
पर आई जस्ट कीप, मेरी बात मेरी ये है कि मैं चुप रहती हूँ। तो जब कोई मौका मिलता है तो फिर मैं जाके थोड़ा बोलती हूँ, हाय आई एम दिस, माय नेम इज दिस, एंड लेट मी स्टार्ट टॉकिंग, हाउ आर यू, दिस दैट। थोड़ी देर के बाद मैं सोच के करती हूँ फिर कैसा ग्रुप है, थोड़ा स्माइल करेंगे, फिर थोड़ा हेलो बोलो, फिर देखो भी कैसे टेस्ट द वाटर्स लिटिल बिट, किस टाइप का ग्रुप है, थोड़ा बात करने वाला है कि नहीं, यू नो। Sometimes they just turn the face, they don't want to talk to you. Some groups then they talk to you, yes my name is this thing, मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, you know, like then you start connecting a little bit here and there. But I suggest that everywhere you go, I mean sometimes you cannot do that, किसी को साथ में ले जाओ, अपने फ्रेंड को या किसी को, सबके, because then you will not feel lonely, you know, you're not alone. So I understand exactly what that means. You know, emotionally, and you know, you're just completely disconnected from everybody in a full room full of people. And there are some signs of loneliness too, that, you know, not besides that example, there are other things too. You have that lonely person feels that no one truly understands you, कोई समझता नहीं आपको, and companionship को या किससे बातें करने की वो उसको बहुत मिस करते हैं, you know, like they feel lonely, alone, तो feeling sad or empty, left out, यही ना लेफ्ट आउट जैसे मैंने पहले बोला है। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, मैंने बहुत जगह में देखा है कि ऑलवेज जब लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई नया आता है तो उसको इतना वेलकम नहीं करते, यू नो। So that's one thing we should do when somebody is coming alone. We should stop and welcome that person, talk to that person, make that person feel comfortable, you know, not just aloof or leave the person alone. So that lonely person और भी lonely feel करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे तो मेरे साथ कोई बात ही नहीं कर रहा. Then he starts feeling a little upset, or a little left out, or a little bit sad, and wishing somebody would call, visit, or spend. And also जो घर में जो होते हैं तो वो भी लोनली, जो घर में सारा दिन अकेले बैठे रहते हैं, तो कोई जा नहीं सकते बाहर. कई होते हैं बेचारे बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, या अकेले होते हैं घर में, तो ड्राइव भी नहीं कर सकते, कितने जा भी नहीं सकते, सारा दिन अकेले घर में कितना टीवी देखोगे, कितना क्या करोगे. उसमें बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होती है फील. पीपल फील वेरी लोनली एंड दे विश दैट समबडी विल कॉल देम एटलीस्ट. तो ये ज़रूरी बात है कि इवन मैंने कोविड के टाइम में भी मैंने सबको कहा था कि अगर आप किसको जानते हो, somebody is alone, तो कॉल, मेक ए फोन कॉल, दैट पर्सन विल रियली बी वेरी वेरी हैप्पी. अभी भी ज़रूरी नहीं कि कोविड के टाइम पे, अभी भी there are people home alone, and you know they have no one to talk to, they feel lonely, and then they get into depression, and that's very very bad. अकेले जो होते हैं तो किससे बात करें, तो टेलीफोन में ही बात कर सकते हो, या you know you can have a group chat, or you can have Zoom वगैरह में भी जा सकते हैं. If the person knows how to do that, you can do that thing too, but you have to be technically savvy to do a lot of things. So that they really wish somebody would call or spend time with them, or somebody will come and visit. So that these kind of things can affect their mood, stress levels, and even physical health if it lasts a long time. तो ये बात है लोनलीनेस की. तो अभी नरेंद्र जी आगे हैं, तो मैं उनको लेकर आती हूँ. Yes, I had a very hard time this morning, but somehow I am able to join you. Yeah. We will have to leave early, so we will try to wrap up. I already started, नरेंद्र जी, मैंने शुरू कर दिया. Urva ji helped me a lot, so extend my profound thanks to her. Yeah, no, thank you. I know. तो मैंने ना वो थोड़ा, because we are already 15 minutes already into it, तो मैंने थोड़ा शुरू किया है. I was talking about the gurus, मैंने शुरू किया. तो अभी मैं थोड़ा लोनलीनेस के बारे में बात करी, अभी मैंने करी है. मैं थोड़ा सॉलिट्यूड के बारे में बात कर रही थी. उसमें आप थोड़ा लोनलीनेस के बारे में बोले. मैंने भी सबको बात करी है, लेकिन आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज हमारा टॉपिक है ना लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड. तो अभी लोनलीनेस की मैं बातें भी कर रही थी कि पीपल कैन फील लोनली इन अ बिग रूम ऑफ पीपल. बहुत बड़ी पार्टी भी हो रही है, इवन देयर यू कैन फील लोनली इफ यू आर लेफ्ट आउट एंड नोबडी इज यू नो पेइंग एनी अटेंशन टू यू और टॉकिंग टू यू, और कुछ भी नहीं कर रहे, तो वहाँ भी बंदा लोनली फील करता है. तो यही मैं कह रही थी कि कई बार ऐसे होता है when you go to a big gathering and they're all in their own groups, जैसे कहते हैं click, तो उसमें you feel left out, you know, many times it happens. पर अभी मैं वही बात कर रही थी. तो अभी
थोड़ा आप भी शेयर करें, यानी say something about loneliness. आपने क्या, according to you, what should we talk about, or what do you think about loneliness? तो आप भी थोड़ी शेयर करें. What is your? So, what is the topic now? Let me understand that what you said. आपने today's topic आपने लिखा था loneliness versus solitude. Yeah. तो मैंने loneliness की तो मैंने सारी बात अभी कर ली है मैंने. I just spoke about loneliness, but you can also say something about loneliness, and then we'll go to solitude. Next, Okay. उसका बात So करेंगे. the topic what we are discussing today is very interesting. It is a personal journey inside. When you are when you say to yourself that you are in a mode of loneliness. Loneliness means you are living outside the world. You are looking at the things, but you have no interest at all. And you may be living in a beautiful Bangalore, but you are looking out the window, but nothing attracts you. Your mind is totally empty. Eyes are totally empty. You are looking at, but you are not looking at anything. So that is called loneliness. You feel that you are left alone. It could be due to a tragedy, or it could be a medical problem. And that is a very serious situation that triggers the lot of other bad diseases inside the body. So we should be extremely careful that that mode of mind should never happen to you. And the only thing which can stop this type of mode of mind is the other word, which is very positive word, and that word is one is the loneliness, one is solitude. Solitude means can the whole environment is very peaceful, and you become a part of the peace, and that is the creation created by Guru Allah Bhagwan. उस वर्ल्ड में जब हम जाते हैं, then it is solitude. When we live in our own world created by our own eye in a situation, in that world there is a often occurrence when we say we are totally lost, nothing interests you. As I said it before, it could be due to a tragedy or a medical problem. But one thing is very interesting to understand, that according to the wisdom of Srimad Bhagavad Gita, we are not the bodies, we are living in the bodies. When you are living in the bodies, you are not the body. And in your body, Bhagavad Gita again says, I am seated in your heart. Bhagwan, Allah, Ishwar, Maheguru ji, वो आपके हृदय में रहते हैं. So you have to bring a lot of practice to believe in this saying that I am never alone. Even you are physically alone, in your heart there is a dwelling of the Almighty, and He is there all the time. So believe in that, develop, practice it, and it cannot be practiced overnight. Most of the people, most of the time in their life, they never believed in that type of thinking. They are looking outside, they go to gurdwaras, temples, mosques, synagogues, churches, and they're trying to find God there. But they don't understand your body is a church, your body is a gurdwara, your body is a temple, because the divine entity is living in your heart. And that being said, you have now developed that habit, and that the name of that habit is meditation. You have to do meditation. Meditation means to mind your mind, and it will take you inside your body. Otherwise, you are living outside. So once your mind is managed through the technique of meditation, there are many ways: mindful meditation and inclusiveness meditation, meditation on the candlelight, meditation on the twilight. There are many divine
opportunities available at no cost. You don't have to pay anybody anything, but you have to practice. We are the product of our habits. If my habit is not, because as I said before many times on this platform, that if you become a doctor, you have to pass the MCAT, right? Right. Without that test, you cannot be a doctor. So you have to MCAT means you have to create a competency. You have to pass the competency test. That when the real study comes, you understand. So people who don't pass MCAT, they don't become doctors. No. मैंने भी Which- थोड़ी नरेंद्र जी रिसर्च आप थोड़ी बात करें, मैंने थोड़ी रिसर्च करी है अबाउट दिस टॉपिक, सो आई विल आल्सो टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट. आप पहले बात कर लो, फिर मैं भी करूंगी थोड़ी बात And- अबाउट लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड के बारे में. आई विल से फ्यू वर्ड्स अबाउट The दैट. idea is there is no such thing as loneliness. It is, but you have to shift the burden and create a competency to penetrate into that type of thinking. And that can happen, I just shared with you, through the technique of meditation and yoga. Yoga will bring, we did that already. हमने बात कर ली थी उसकी भी पहले, अब आप आए नहीं थे ना, तो मैंने लोनलीनेस की काफी सॉलिट्यूड की बात करते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट लोनलीनेस. yeah, Difference क्या है? I'm going to say a few things also about solitude जो मैंने, because I was जब टॉपिक कल हमने किया था तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था. I found that solitude is, a lot of people they like to spend time alone. They don't want to be with anybody. अकेले रहना चाहते हैं. कई लोग होते हैं ऐसे. Some people they like to be alone. They don't want anybody. Or loneliness other way around, opposite है. They don't want to be lonely. They want people to call them. कोई आए बात करे. Why solitude is something you want to be left alone. Sometimes you don't want to be bothered with anything. So that is a difference between the two, which I have found. Choosing to spend time alone and enjoying it. Of course, meditation is a big help. You don't have to be alone, but sometimes it is good to be positive and peaceful and get a good experience too to being alone. Because when you're alone, I think you get a lot of thoughts, a lot of things in your mind, which I do personally. Okay, when I'm alone, I can even go to see a movie alone. I can go shopping alone. I feel very happy. तो अपनी कंपनी मुझे अच्छी लगती है. कईयों को नहीं, कईयों को उनको भीड़ चाहिए, कईयों को नहीं चाहिए, कईयों they want to be alone. I personally like to go. I don't mind going to see a movie. I've been to many movies alone. तो कोई नहीं मिले तो मैंने कहा मैंने मूवी देखनी है, तो कोई नहीं मिलता तो मैं चली जाती हूँ. मॉल में कहीं जाना होता है, I go alone many time and I enjoy it. So that's the difference, lot of difference between the two. The benefits of solitude, और ये भी तो है, it's time for reflection. Like I said, you can think a lot of things, reflection and personal growth, opportunity to pray and meditate and connect with God. See, when you're alone, तब भी कर सकते हो. सबके साथ तो गुरुद्वारे मंदिरों में कर सकते हो, लेकिन when you're home alone, sometimes you can do the meditation जैसे आपने बोला है अभी, or connect with the God one on one. yeah. ये कर सकते हो, you know. Or you can do a lot of reading and writing. अगर आपको singing पसंद है, hobbies पसंद है, you know, you can reduce the stress and mental clarity, and you can increase the creativity of yourself with inner peace. When you, all these things can be done when you're alone. You don't have to be lonely when you're alone actually. So that's the main difference I feel. कि दोनों आपने ये टॉपिक अच्छा बोला है कि loneliness में ये कहता है बंदा ये कहेगा I'm alone and I wish I wasn't alone. Solitude में बंदा कहेगा I'm alone and I'm at peace with it. That's the difference between the two. तो ये डिपेंड करता है कैसे आपका आउटलुक क्या है लाइफ में. You know? That's true. That is true. So that's the thing. Yeah, the only thing I would like to add that the loneliness, it is the abstract thought. Everything is there with you, but there is no interest. Your eyes are wide open, but you don't see anything. So it relates to mind. Where is your mind? And in your mind, I said many times, there is an integral part of memory. उस मेमोरी में आपने सेव क्या किया हुआ है और क्या कर रहे हो, that is the main point. If there is a negativity, if there is if something has happened and you didn't let it go and you put it in your memory, then you cannot be in a solitude. It will be loneliness,
because in your memory is dictating your mood. So be very careful. If some incident or accident happens in life, they are going to happen anyway. Be very careful not to save it. Hmm. Pray. That is Yeah. the beauty of pray. We pray to the Almighty कि प्रभु मेरे मन में शांति रहे, मैं इस ट्रेजेडी को जाने दूं. अगर आपने उसको रोक लिया है, then it's a big problem. And Yes. does not matter what medicine you take or what you do, it will not work. It works with the memory. So be very careful what you are holding in your mind on a daily basis. And that is, it both the concepts relate to the memory, I know. loneliness and और solitude. अभी काफी लोगों ने निरंतर जी कमेंट्स लिखे हैं, थोड़ा मैं पढ़ती हूँ. Let's hear what the people are saying. अशोक रमा जी भी देख रही हैं, अच्छा they're watching, and नीलम जी भी हैं, and कमलेश जी कहती हैं कि I'm so happy to learn. मैंने पहले so much knowledge, history, as it's never too late to learn the history of Sikhism. Okay, मैंने थोड़ा okay, आज जो है ना मेरी पीढ़ी कहते हैं, वो गुरु हरकृष्ण साहब, सॉरी, गुरु हरगोबिंद जी ने शुरू किया था. It's called मेरी पीढ़ी. That's something the sword. तो मैंने थोड़ा explain किया था, you know, Sikhism में. And today also, in a few days also, Guru Har ji ka, you know, he passed away. He was only 78 years old. But anyway, Ramaji carrying a very good topic, very well said. Vinaji, these days loneliness is killing people. Ramaji, you're right. A lot of people are lonely in their own house, and they सारा दिन अकेले बैठे रहते हैं, उनको समझ नहीं आती किससे बात करें. That's why it's very important to reach out to people, give them a call when you feel that they are all alone or they need some company. So if you can't go there, give them a call. And Ashok ji लिखते हैं, what a beautiful topic today, loneliness versus solitude. And Kamlesh ji दोबारा लिखते हैं, the most important session about loneliness, it's reality, how much you suffer. And Rama ji लिखती हैं, and these people want to spend time with only people they feel comfortable with. That is also true. Rama ji, people like to spend, अकेले नहीं होते, they want to spend time with people they know. They don't want to be with like new people, new crowd. ये भी तो है. So Ashok ji कहते हैं, good explanation of मेरी पीढ़ी. Thank you, Ashok ji. I tried my best. You know, I got some help from my good friend. So but we got some help from there. But I thought I'll explain a little bit about that because today was this exact date, July 24th. So that's the thing. But anyway, निरंजन जी की मैं बात कर रही थी. निरंजन जी, solitude and Yeah, solitude, उसको कैसे convert करें? ये बताओ. When you're lonely, how do you convert to then from loneliness to solitude? How do you turn around? my humble addition to that facts which the audience have said many times, and they are writing Yes. that the main difference between solitude and loneliness is when you live in your own world created by you, which is called the world of I-ness, जिस पे आपने I की stamp लगाई हुई है, then the loneliness pops up. When you are living in the world created by the Almighty, Bhagwan Shri Krishna, Allah, Maharaj ji and Gurudev Maharaj, अगर उनकी दुनिया में रहते हो, called nature. If you love the nature, you will never ever be in the mode of loneliness. It will be always solitude. Because like it's a very good example, when you go on vacation, you are in the lap of the nature. Every day you go to the beaches, every day you touch the water, every day you walk and talk. And that is when you come back to your own residence, those things disappear. And those realities which you saw yourself, you were the eyewitness, it haunts you now. And therefore we must practice. We must practice to live in the creation created by the Creator. समुद्र के किनारे जाओ, get up early in the morning, look at the sky, look at the majestic glow of the rising sun. If you are doing those things on a regular basis, persistently with perseverance every day, you will never ever be
in a mode of loneliness. It will always be solitude. Because in the world in which we are living, it is full of so many inflictions created by the man himself. As we are talking on this forum, Yes. thousands of people are being killed, thousands every day. So if we are living in this type of world, where you are trying to find the solitude, it will not be. It will be loneliness. So we should be very careful to invest our time and resources and practice on a daily basis to live in the world created by the Almighty. And that I gave you many examples. Look at the galaxies, stars, moons, water at the top of the hill, talk to the bushes, birds, trees, go to the nursery, talk to the roses, butterflies. That is the world in which there is always a solitude and no loneliness. But if you reverse, like I gave you the example, a person who is a mode of loneliness, her or his house is beautiful house, beautifully decorated. But when that mode is kicks in, the eyes are open, you see, but you don't see anything. Hmm. Everything disappears right in front of you. I bring the best thing, you will not look at it because you are at a different level of thinking. They need help. That's that they need help. The ones who are going through that, the person who is जैसे आप कह रहे हो तो that means he's very much deeply lonely, very much lonely. So it's difficult. That person needs medical help. It reaches that point कि उसको medical help चाहिए अब. When he reaches that point, that's very depressing. कि इतना उसको हो गया है. That means he needs some medication or something like that. Help from the doctor. अभी वो स्टेज चली गई है, मेडिटेट करो, ये करो. He's above that now. He's higher up. So he needs a lot of. And, and also don't become a medicine person. Right. A person of taking medicine all the time. Try to avoid it To avoid, yes. As far because as the medical profession has become patient oriented. They need patient, and because they have to sell the medicines. It is your judicious understanding that if you can refrain and concentrate certain elements, like you watch your food, what goes in, it is your duty. It is Yeah. not doctor's duty. So don't put junk inside. Junk in, junk out. That is what the definition is. And take care of your thoughts. exactly. What do you think? Okay, depression does not develop overnight. So think. वही Stay. मैं कह रही हूँ, थोड़े से points हैं, जैसे आप कह रहे हो ना, don't stay in that depressing mode. If you really want to get out of loneliness, I would say, very suggestion है, stay connected with family and friends. Okay? Some level में call करो, अगर वो नहीं करते आप करो, call some people, join some community groups, कहते हैं ना volunteer करो. देखो volunteer जो करते हैं, they're so happy. I've seen a lot of people volunteering in the hospital में, कभी animal shelter में, they're all volunteering with the animals. They love the dogs. They go back very happy because they did something good. So if you do some good deed, you feel so much happy. You won't feel lonely anymore. So join some activities like that. You can take walks, exercise karo thodi. Listen to some good shabad, kirtan, bhajan suno. Koi music suno which you like. Practice gratitude and meditation and prayer every day too. That also will help. Okay, सारा दिन ऐसे lonely बैठे रहो, but you should prayer, meditate, thankfulness, have some compassion. There might be somebody else who's more lonelier than you. You don't know. Or you know. That's why you have to get out of it and help somebody else. So मेरा तो ये है कि best है कि a lot of older people I see in the hospitals, I really admire them. तो newspaper लेके जा रहे हैं, कोई magazine लेके जा रहा है, कोई आपके साथ बैठ के बात करता है. Those kind of things are not only good for the patient, it's also good for the giver. You said it is perfectly right. In spiritual parlance, Yes. they said there are three states of mind: Rajasic, Tamasic, and Sattvic. What you said, in order to avoid this
this terrible situation of loneliness, try to develop a mind of sattvic state of mind, which means your mind should be possessive of compassion, Exactly. empathy for others, and the elimination of ego. ईगो जितनी आप ईगो स्ट्रांग है आपका ये मूड बन नहीं सकता. So be very careful. Are you egomania or you are okay? When you don't have, when you have diminished your ego, you will do charitable works. You will go to, as you said, it, hospitals, churches, synagogues, and the other places where the underprivileged people are living, who are not getting enough food, clothes, and so nurse them. Then that state of mind, you don't need popularity. It should be a silent situation of हाँ, your. जैसे नरेंद्र जी, मैंने जब लॉन्ग टाइम अभी अभी भी आई वांट टू डू द अगेन, पर मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा. सूप किचन में जैसे होता है ना, सूप किचन में एवरी डे पीपल लाइन अप, दे डोंट हैव फूड टू ईट, तो उनको bags घर जाने बच्चों के लिए, to give them some bags to take home for the kids, but every day the same people are there. I went to the soup kitchen. I used to go there every year actually, Diwali ke time, with the food drive, with the ILI, but that's done now. I don't go to ILI anymore. I don't do anything with them, but they used to do the food drive. When was a good ILI ka time tha, so I used to be involved a lot. I was very much involved. So food drive ke time, Diwali ke time, we used to sponsor the vegetarian lunch. तो मैंने I couldn't believe कि एक साल पहले वही बंदे मैंने वही लोग देखे थे, and after 1 year I'm going, I am seeing the same people. Right. They're still there. They're coming every day to eat because हम कहाँ we don't have, and they also give them clothes, like shower करने की जगह, shelter. They used to give them food to take home for the kids, but and sometimes the lines were outside. इतनी लंबी लाइनें, and people don't have any. एक बारी दिन में खाते हैं वो बेचारे. So that, and then when you serve them, you go home and you feel gratitude ऊपर वाले से कि भगवान मुझे सब कुछ मुझे दिया हुआ है, but I had a chance to give to somebody else, help somebody, and that is a very good positive feeling for you, for yourself. कि कुछ किया है, not sitting home and crying. You got out of the house, you did something, you did a good deed for the day. You served somebody. Some people who are, they cannot do anything for them, नहीं कर सकते, उनको थोड़ा serve किया, थोड़ी help करिए. And that is I'm telling you, that one of the best feelings you will ever get in your life, when you help somebody else. Anyway, भगवान की तरफ से, फिजिकल तरफ से, फोन कॉल करने से, किसको डॉक्टर के पास ले जाने से, किसको दवाई लेकर दे दो, किसको 5 बड़ा लंच खिला दो. Everything you said is perfectly all right, but at the same time we should be very careful that it will not feed your ego that I am doing that, I am doing that. Don't propagate. It should be anonymous. Your name should never appear. Practice that also, because you are ईश्वर के, अल्लाह के, वाहिगुरु जी के काम कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो उसमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं वहां गया. Never. Like I just shared today with everybody. Nobody knew I did that. Yeah. नरेंद्र जी, मैंने किसका शेयर किया है अभी, मैं because the topic is coming up, इसका क्या मैंने शेयर किया है. मैं वैसे कह रहा हूँ. हमने मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये था, just to give an example, कि I used to do that and I used to come home feel good. So मैं ये सोचती, I wish I could do more. I want to go back, और मुझे चांस नहीं मिल रहा. But I would like to do something like that. Sorry for interruption. No, it's okay. It's of mind. एक है कि एक बेगर है आपसे मांग रहा है, तो आपने उसको $10 दे दिए, या उसको भोजन खिला दिया, फूड दे दी. तो अगर मेरे माइंड में अब ये है, ये इसको कहते हैं दया, मतलब आपको दया आ गई, आपने उसको दे दिया. लेकिन इससे जो सुपीरियर एक्ट है, एक्ट आप यही हम कहेंगे, उसको ऐसे ही देंगे, लेकिन हम ये भी कहेंगे, इस स्टेट ऑफ माइंड में जो पहला एक्ट मैंने बताया, उसमें ये है कि ये भिखारी रहे और मैं देता रहूं. लगा पता?
and that is a very unreasonable thought of thinking कि ये भिखारी रहे और मैं कॉम्पिटेंट रहूं, मेरे प्रभु मुझे पैसे देते रहे, मैं इनको देता रहूं। एक थॉट है कि हे प्रभु मैंने तो दे दिया, ये आपका ही था, मैंने नहीं दिया कुछ, आई एम जस्ट मिडिल मैन, इसको अमीर बना दो। ये कोई नहीं कहता कि ये Right. जो है ये भिखारी ना रहे, ये भी मेरी तरह हो जाए, ये भी लोगों के अच्छे काम करे, इसकी कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर दो। ये लोग नहीं कहते, वो ये अंदर से उनकी भावना ये है कि मैं देता रहूं। उनको ये नहीं पता कि यू आर नथिंग, यू आर जस्ट ट्रस्टिंग, यू आर जस्ट ए कैशियर। Correct. ये जो आप दे रहे हो ये आपका नहीं है, जो आप अपॉर्चुनिटी। तो ये थिंकिंग भी होनी चाहिए कि हे प्रभु इस अंडर प्रिविलेज पर्सन जो है, जो भी ये कर रहा है, इसको कॉम्पिटेंट बना दो, मेरी बना दो, ये भी खुश रहे, और ये इसकी भी थिंकिंग मेरी तरह से हो जाए, ये मल्टीप्लाई होते, ये सुंदर जो ये क्रिएशन बन जाए। तो इस टाइप की थिंकिंग को भी पैटर्नाइज करना चाहिए पीरियोडिकली, कि उनके लिए प्रार्थना की जाए कि ये भिखारी ना रहे। जैसे कोई सिक है तो हम कहते हैं कि ये हेल्दी हो जाए, दवाई तो देते हैं हम, बट कहते हैं कि ये हेल्दी हो जाए। ऐसे ही जब हम सेवा करें तो जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास ऐसी प्रिविलेज नहीं है, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, इसको भी कॉम्पिटेंट बना दो, इसकी भी सेहत अच्छी कर दो, ये भी मांगना छोड़ दे, क्योंकि इट्स ए टेरिबल सिचुएशन। तो ये जो भाव है ना, ये And I only sorry, but the thing is this, Neelam ji ka hai, such beautiful suggestions given by both of you, Narinder ji and Veena ji, on loneliness in solitude, which anybody can go through in today's life. I know a few people, Rama ji kehti, I know a few people feel proud to say that my hand is always in giving mode. Ashok ji dekh rahe hain. देखो ना नरेंद्र जी, when you're doing something, you don't know the person क्या कर रहा है, क्या उसके माइंड में क्या है, क्या पता होता है किसके माइंड में। अपना you have to check what you are doing, अपना माइंड देखो। You can only control yourself, you cannot control the other person, but they are thinking. तो अपना तो मालूम होता है क्या सोच रहे हैं, we know about yourself. But you're right, जैसे देखो ना, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, जो people दान देते हैं या they give some donations, they want to have the name on the top. हमने इतना दिया, हमने इतना पैसा दिया, right? So that also is kind of showing off in a way. Yeah, you are right. That's the same. वही मैं कह रही हूँ, थ्योरी यही है कि जो देते हैं चुप करके दो, give, why you have to give your name? तो दे दो, no name to be given. ये भी एक अपने आप को हमें रिमाइंड कराते रहना, periodically we should reassess and remind ourselves. Nothing belongs to you. Whatever privilege you have, it is Almighty, वाहिगुरु की है। तो आप सिर्फ मिडिल मैन हो। अगर ऐसी थिंकिंग है तो आपकी ईगो मैनेज रहेगी, नहीं तो इसी पॉजिटिव एक्ट के थ्रू नेगेटिव ईगो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मैंने 100,000 दिया, मैंने 50,000 दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, then the act is good, result is negative. Motive is not. मेरी थिंकिंग ये है कि if you are standing in some situation, जैसे आपने बोला किसी बच्चे को या किसी को पास खाने की जरूरत है या कुछ है, आपको भगवान ने वहां पे रखा है, करा है हेल्प करने के लिए. He can't be there everywhere. He's putting you in that position to help. Take that as a कि God is direct, बाबा जी या जो भी हैं आपको डायरेक्ट कर रहे हैं कि उसकी थोड़ी हेल्प करो. He cannot be, वो आप तो आ नहीं सकते, तो तुम्हारे थ्रू जा रहे हैं, going through you to do the good deed, right? This is what I feel. He's going to do the good deed because he cannot come out, he's going through you. So that means how much he has confidence in you कि आपके थ्रू आप कर रहे हो. तो ऐसा सोचो तो थोड़ा आपका माइंड अंडरस्टैंड कहाँ भगवान कहाँ पर है, बाबा जी कहाँ पर है, किस तरीके से हेल्प करते हैं लोगों को. हट के हाँ मुझे नजर नहीं आते, मैं प्रेयर करती हूँ, मुझे समझ नहीं. That's not the way it is. These are the kind of acts where बाबा जी, गॉड, बाबा जिसको भी बोल दो, जीसस क्राइस्ट,
this is the way he's coming in and coming through you, and that's why he's showing where he is. This is what it is. So that's That, the way. This is my way of thinking. A lot of things I think like that, and that he cannot be there everywhere. Time आता है help करने के लिए, धर्मी जो आपको किसने ऊपर वाले ने भेजा कि you are in a position to help. विनय जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इसका जो लिटमस टेस्ट है फॉर एवरीबॉडी कि एम आई ऑन द ट्रैक और नॉट, तो उसका लिटमस टेस्ट आप अपने आपको जज करो कि मेरे में ये क्वालिटीज हैं कि नहीं है। प्रिटेंड नहीं करो, हम सब अपने आप को एनालाइज करें कि मेरे में ये क्वालिटी You have to be honest with yourself. क्या, अगर नहीं है तो ट्राई टू रीइंस्टेट विद प्रैक्टिस। और वो है सात्विक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करो, सात्विक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करो। आपका माइंड ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज हम डू दी पॉजिटिव थिंग, द रिजल्ट इज नेगेटिव। द इंटेंट, देखो मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ, द इंटेंट एंड मोटिव ऑफ योर एक्शन will decide the quality of your action. So if your intent is bad, motive may be good, or your motive is bad, intent may be good, it will not work. Intent and motive will decide the quality of action. चाहे वो चैरिटेबल एक्शन है, चाहे कोई भी एक्ट है, ये आप ध्यान रखो कि भाई मैं चाहता क्या हूँ। अगर आप प्रभु के काम कर रहे हो तो प्रभु का कहो कि मैंने प्रभु के नाम पे प्रभु का कर दिया, मेरे तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे मेरा। हम कहते तो हैं, लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो ये थॉट नहीं होते कि तेरा तुझको अर्पण। ये मांगने वाला भी वही गुरु है, देने वाला वही गुरु है, लेकिन साथ में ये जरूर करना चाहिए ग्रेटिट्यूड, इन टर्म्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। हे प्रभु, इसको भी इस स्टेट change the situation, बंदे की लाइफ थोड़ी चेंज कर दो, that's what we should be thinking. Yeah. But so anyway, today's topic is really good, excellent topic, and आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट बोला। मैंने रात को थोड़ी रिसर्च करी, मैंने थोड़ा भगवान का, बाबा जी का भी देखा। मैं कहा थोड़ा देखो आज कौन से गुरु का है। So combined with the two things, it came out a very good program. And this loneliness and solitude, a lot of people, they feel it. अभी देखो ना हमारे सोसाइटी में लोगों को, a lot of people going through that problem, but we don't know who they are. We can't tell. But if you feel that किसको help चाहिए या कुछ चाहिए, at least make a phone call. Yeah. और कई चीजें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं। लेकिन उसी छोटी सी जगह में बैठ के कंप्लेंट ना करो। ये कहता हूँ मैं कि भाई सिचुएशन, ट्राई टू चेंज द सिचुएशन आल्सो विद योर माइंड। लेना देना किसी से कुछ नहीं है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थिंकिंग। Correct. So develop प्रैक्टिस कि मेरी थॉट्स कैसी हैं, आर दे embedded with सेल्फिशनेस। मैं नेम और फेम चाहता हूँ कि मैं ईश्वर के काम करना चाहता हूँ। अगर ईश्वर के काम में मैं लगा हुआ तो मेरे में ह्यूमिलिटी होगी। आई विल नेवर यूज द वर्ड आई विल यूज द वर्ड भगवान, वाहेगुरु। मैं तो एक एजेंट हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसको दे रहा हूँ इसको भी मेरे जैसा, ये कोई नहीं कहता। भिखारी को पैसे तो दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि भिखारी भी अमीर बन, इसको भी ऐसे मेरी तरह बना दो। तो ये चाहिए अंडर। हाँ जी, बस। Thank you, Narendra ji. Thank you so much. I have to really go to something important. मेरी अपॉइंटमेंट है, थोड़ी देर होगी मुझे, लेकिन anyway, this topic is really very very, like I said, रिसर्च किया, so I came to know a lot of things. थोड़ा रिसर्च करो, come to know a lot of things too. आपने बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने ये टॉपिक रेकमेंड किया, and all the people who joined me today, I'm going to thank each and every one of you. Your comments and input is very very important to us. I want to really thank you so much. So nice of you to do that, and thanks a lot. All of you just joined, and थैंक यू नरेंद्र जी। आप भी आए, थोड़ा लेट आए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। वाई टेक्निकल प्रॉब्लम आजकल काफी हो रही है, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी या कुछ है, समथिंग इज गोइंग ऑन।
But anyway, eventually you joined. That was the main thing. That was really good. And I'm glad that you reached out to me yesterday. मैंने कहा मैं जा रही हूँ. I'm going to be alone tomorrow. तो आपने कहा मैं कहा आ जाओ आप. So it was good to have two people than have being alone. So it was a good. Thank you so much. Yeah. And thanks to all the friends who joined, and your input and your whatever your comments were really important. Thank you. So Nirunda ji, aapko thank you so much for coming, and thanks a lot. Where there is a will, there is a way. Yes, I agree. 100%. I'm like that too. Yeah. I don't give up that easy. But anyway, फिर आएंगे next Wednesday को. बहुत अच्छा है, हमारे गेस्ट आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं. So a nice, important, entertaining program. So please everybody join and listen to him. He's going to be coming next Wednesday. So and next Friday we're going to have a group Shukrana. That's going to be coming. So hold on, everybody, have enjoy. And also I think a lot of you know that we're going through a membership drive right now. A lot of you have become members, and I appreciate the ones who have not to please join the bandwagon, or whatever you call it. Join karo. So thank you. I'll see you soon, and have a nice weekend, everyone. Namaskar, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, Jai Shri Krishna to everyone. And Narinder ji, thank you so much. आपको भी. Thank And my regards to everybody. Manni ji को सबको मेरी regards देना. Thank you. Jai Shri. Thank you.